Hello guys, I am Yatin and from today I am starting gynecology and obstetrics series, and our first topic is diabetes in pregnancy. The diabetes in pregnancy is classified into the overt diabetes and other is gestational one. So pregnancy is highly diabetogenic state, and there are some factors that influence for causing diabetes in pregnancy. So first factor is insulin resistance. Why there is insulin resistance? There are some factors that cause this thing. First one is production of HPL. This is one of the most important factors that leads to the insulin resistance. And the second one is increased production of estrogen, progesterone and cortisols. And the third one is increase of insulin excretion from kidney and placenta. Okay, this is the main three factors that influences the insulin resistance to occur in pregnancy. And the second one is increased lipolysis. And the third one is altering gluconeogenesis. So these are the main three factors. And now we will discuss about the overt diabetes, our today's main topic for discussion. Now, what is overt diabetes? This is our first question. Overt diabetes is a like कोई फीमेल आई है आपके पास, उसका फर्स्ट डे ऑफ आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आपने देखा कि ये तो प्रेग्नेंट है, और आप जब सीबीसी करोगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि उस फीमेल का जो रैंडम प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज है दैट इज़ हाई. सो व्हाट इज़ आवर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज? That is 3.3 to 5.5 millimole per liter. So अगर कोई फीमेल आई है, आपने उसके सीबीसी में देखा कि उसका ग्लूकोज लेवल हाई है, तो that means that female is having the diabetes chronically. Okay, it may be type 1 or it may be type 2. So what is overt diabetes? Means a female that is having diabetes before 20 week of pregnancy. 20 weeks of pregnancy. So in this case, in overt diabetes, what are the second most important thing is, in this case we will see congenital malformations. I will discuss the reason about it later on. And the third one is after the delivery of the baby, the diabetes level will not come to the normal one. So the postpartum diabetic level will not come to normal.
So these are the three main factors. Okay, three main things about the overdiabetes. Once I will repeat again. A female that is having chronic diabetes, that may be type 1 or it can be type 2, and there will be, in overdiabetes you will see the congenital malformations, and the third one is the postpartum diabetic level will not comes to the normal, that is this one. After that I will discuss about the congenital, why there is a congenital malformation in the overt diabetes. That is in overt diabetes. As I told you, मतलब ओवर डायबिटीज़ पेशेंट में क्या होता है, उनको पहले प्रेगनेंसी के पहले दिन से ही डायबिटीज़ होती है, मतलब शी इज़ हैविंग द डायबिटीज़ फ्रॉम previously, like it may be 10 years, we don't know about it. So in this case, अगर उसको पहले दिन से ही डायबिटीज़ है तो ऑर्गेनोजेनेसिस इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे बच्चे के सारे ऑर्गन्स वगैरह फॉर्म होते हैं. सो ऑर्गेनोजेनेसिस जनरली कंप्लीट हो जाता है हमारा अप टू 20 वीक्स तक, और बॉडी में ऐसी कुछ रिएक्शंस वगैरह होती हैं जो वो रिएक्शंस लीड्स टू द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, और जो वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो हमारे मतलब फीटस के लिए वो अच्छे मतलब ठीक नहीं होते हैं. तो सो दैट फ्री रेडिकल विल लीड्स टू द कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन इन द फीटस. इवन जो वो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आफ्टर हम जब 60 साल के बाद आपकी एजिंग वगैरह भी वो फ्री रेडिकल्स की वजह से ही होते हैं. सो इन दिस केस द फ्री रेडिकल formation leads to congenital malformations. So this is the main culprit here for the congenital malformations. अब कौन कौन सी ऐसी congenital malformation है जो बहुत common है तो वो हम देखेंगे, ठीक है. The most common congenital malformation you will see in the pregnant women with the diabetes is VSD, ठीक है. And the most specific, if they ask you the most specific congenital malformation, that is transpositioning of great vessels. Okay. So the most common congenital malformations is VSD, that is ventral septal defect, and the most specific congenital malformation is transpositioning of great vessel. So what is transpositioning of great vessel? Normally from the left ventricle there is the aorta will arise from the left ventricle, and from right ventricle pulmonary vein will arise, and in transpositioning of great vessel you will see that the pulmonary will arise from the left one and aorta will arise from the right ventricle. So this is mainly about it. Now this is what all we have about the congenital malformation and the diabetes. Now our next topic about it is डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. सो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपको पता है कि ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इस कैसे डायग्नोस करेंगे हम ओवर डायबिटीज़. सो फॉर दिस जब भी कोई पेशेंट आती है जनरली कोई प्रेग्नेंट होता है तो वो स्क्रीनिंग के लिए या रूटीन चेकअप्स के लिए आते रहता है. सो जब वो फीमेल आती है आपके पास, आप उसको रेकमेंड करते हो CBC,
जब सीबीसी में, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, कि सीबीसी में आप देखोगे कि उसका जो रैंडम ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज है वो ज़्यादा है अगर 200 mg पर DL से. इफ़ इट इज़ मोर देन 200 mg पर DL, सो इट विल टेल अस अबाउट कि इस पेशेंट को पक्का डायबिटीज़ है. ठीक है. और अगर आप फिर भी अब देखना चाहते हो कि क्या पता उस मतलब रात में उसने कुछ ज़्यादा मीठा खा लिया हो, उसकी वजह से भी तो उसका हो सकता है, हमें क्या पता. So in this case, we will do one of the most important tests is HbA1c. This is the diagnostic for overt diabetes. The first test is random blood plasma glucose, and the second one is HbA1c. So what is HbA1c? It is a product of non-enzymatic glycosylation, and it will reflect us average blood sugar level फ्रॉम लाइक पिछले 6 से 8 वीक्स में उसका क्या नॉर्मल एवरेज ब्लड शुगर लेवल रहा है. HbA1c हमें ये बताता है. नॉर्मली जो HbA1c की वैल्यू होती है दैट शुड बी लेस देन 6%. ओके. अगर मतलब हमें इन प्रेग्नेंट वीमेन अगर आपको HbA1c की वैल्यू लेस देन 8.5% दिख रही है तो मतलब इसमें क्या होता है, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं 5%. इफ़ इट इज़ मोर देन 10% देन कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन के चांसेस 22% होते हैं. सो दिस इज़ अबाउट HbA1c. इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, अगर HbA1c का लेवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्रीज़ हुआ है, इन HbA1c का लेवल इंक्रीजेस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उससे क्या होगा, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस दिखेंगे आपको फीटस में. अगर HbA1c का लेवल इंक्रीज़ होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर तक तो उसकी सारी ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह कंप्लीट हो चुकी होती हैं, तो इन दिस केस वी विल सी मैक्रोसोमिया. मैक्रोसोमिया में मतलब बच्चा बहुत मोटा गुगलू मुगलू टाइप होता है, उसका काफ़ी वेट होता है, मोर देन 4.5 kg. और दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर द C सेक्शन इन डायबिटिक वुमेन विद fetus with macrosomia. Now this is about the diagnostic criteria for the overt diabetes. Now what is the treatment for overt diabetes? Treatment for overt diabetes. जनरली हम क्या करते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको हम कभी भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कभी भी रेकमेंड नहीं करते हैं. बट अब रिसेंटली हम जनरली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में अब सिर्फ ग्लिबराइड्स और मेटफॉर्मिन दे सकते हैं. बट जनरली व्हाट वी विल गिव इज़ इंसुलिन. नेवर गिव ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स टू अ प्रेग्नेंट वुमेन. वी ऑलवेज गिव इंसुलिन, बट एक्सेप्ट 2 ड्रग्स हैं जो आप दे सकते हो प्रेगनेंसी में, दैट इज ग्लिबराइड्स एंड मेटफॉर्मिन. That we can give in pregnancy. It's 2 drugs, that is ये सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप से है और ये मेटफॉर्मिन. और जनरली ट्रीटमेंट में पहले सबसे ज़्यादा हम उनको क्या बोलेंगे, पहले
ले हम उनको बोलेंगे कि एक्सरसाइज और डाइटरी कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन डायबिटिक पेशेंट। सो उसको बोलेंगे अपनी डाइट पे कंट्रोल करो और क्या करो कि एवरी डे यू हैव टू डू द एक्सरसाइज। अगर डाइट और एक्सरसाइज ये मैनेजमेंट नहीं काम करती, देन ओनली वी विल गिव इंसुलिन and oral hypoglycemic agents. But as this patient is having the overt diabetes, ये तो हमने कहा कि ये तो हम पहले से कर रहे, तो in this case डाइट और एक्सरसाइज इतना मैटर नहीं करती, तो we will give insulin because patient is already having the oral hypoglycemic agents pregnancy से पहले. So the definite treatment for the diabetic state is termination of the pregnancy, means, or we can say induce the labor, or you can go for the cesarean section if the baby is having the macrosomia. So definite treatment for diabetic women is डिलीवरी का भी डिपेंड करता है, इफ़ अगर तो वो टर्म प्रेगनेंसी है कि प्री टर्म प्रेगनेंसी है। अगर तो वो टर्म प्रेगनेंसी है तो आपने क्या करना है, इंड्यूस करनी है लेबर, इंड्यूस द लेबर। एंड इफ़ इट इज़ प्री टर्म, क्योंकि वो प्री टर्म है तो उसकी अभी तक लंग मैचुरेशन वगैरह नहीं हुई होगी, सो हमने इन दिस केस बीटा मेथासोन देना है पेशेंट को, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। So this is about the diabetes, and in second video we will discuss about the gestational valve. Thank you.